Hello everyone, this is Innovative from Market Warehouse, and the second video we have learned about how to filter the stocks. So the video was short, so I made a note of that, and please go through the note because market में पैसा बनाना है तो you must should learn, and जब तक learning नहीं होता तो पैसा नहीं बनेगा, तो आप इसको पढ़िएगा. And here I am detailed everything whatever I have left over there. ठीक है, तो ये बिफोर पिकिंग ए स्टॉक हमको क्या क्या ध्यान रखना है फॉर मेकिंग मनी इन लॉन्ग टर्म. कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले हमको क्या क्या ध्यान रखना है उस स्टॉक के बारे में, ताकि हम लोग लंबे समय तक पैसा बना सकें एंड यू कैन एबल टू मेक ए गुड मनी फ्रॉम डैट. ओके, एंड मेरा जो दोनों टेक्निक है, आई एम गोइंग टू गिव यू टू टेक्निक एंड बोथ द टेक्निक्स will work only with this parameter. Okay, wait a minute, why it's coming again. Okay, so the basic parameter that you need to be checked is market capitalization. ठीक है, तो लार्ज कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 45,000 crore. ठीक है, मिड कैप लेस देन 45,000 crore but greater than 15,000 crore. ओके, एंड फॉर स्मॉल कैप शुड बी लेस देन 15,000 crore. पी रेसी क्या होना चाहिए, यू मस्ट शुड बुक वैल्यू क्या होना चाहिए, डिविडेंड यील्ड क्या होना चाहिए, आरओसी कितना होना चाहिए, आरओई कितना होना चाहिए, प्लेस परसेंटेज, डेब्ट टू इक्विटी, ये सारे यू कैन पुट इट these parameters in stock filter in screens of screener, and you can filter out the stocks. Okay, so just read this all, and based on this filter your stocks, and definitely you can make money in long term. So this is one of the short notes and best note for you that I have created based upon my second video. Okay, thank you.